78 individuals were evacuated by the Indian government from Afghanistan. They have completed 14 days in quarantine at the ITBP camp in Delhi. Out of them were 56 Afghan nationals, men, women, and even infant children. I went looking for them, searching for them to know who are these individuals who had to flee Afghanistan. And while many may have already forgotten them, I went on the ground to find out how they are planning to start their life afresh. Take a look at this ground report about Afghan, Hindu and Sikhs who are finally set to restart their life with an uncertain future. Relaxing, playing, finally breathing freedom. Leaving behind tumultuous weeks in Kabul, airlifted by the Indian government now. Completing 14 days quarantine at the Chawla camp of the Indo-Tibetan Border Police in Delhi. The last batch of 53 Afghan Hindus and Sikhs are starting a new life in India. Among friendly faces in a stranger land. 75-year-old Raghuveer Singh fled with just one bag in hand. चार जोड़े कपड़े ले सूट ले गया कुछ और नहीं लिया नहीं और साड़ी सारे अफगानिस्तान ने कर जय जायदाद दुकाना कार सब कुछ असाड़ो थे रह गए उधर बहुत डरे उधर तो डरे कि तालिबान से बहुत डरे इतने तालिबान डरे कि सारे वाल बड़े बड़े वाल छोड़े बड़ी बड़ी दाढ़ी छोड़े नहीं उसको ले सन में डरा दे हम लोग आपके साथ है सपोर्ट है आप लोग ठीक रहे खुश रहे. Women in Afghanistan, specifically from the religious minority groups, have suffered the worst under the repressive Taliban rule. क्या करी मुश्किलात ज़्यादा आ गई परेशानी ज़्यादा गई बच्चों को ले जाते मार दें बच्चों को मार दें छोड़ दें नहीं है डर होता है जूड़े पटते हैं पीछे गालां कट दें बहुत दिमाग खराब जनानियां नहीं छोड़े दुपट्टे के अंदर पौरते करो बंद कवर करो हाँ नेल पॉलिश देखे उंगलियां कटता है हाथ कटता है मारता है की करिए बहुत मुश्किलात है थोड़ा शांति हो गई कि डर नहीं है सानू वो वाला वहाँ का उसका डर नहीं है सानू मार दे कार को ले जाता है मेरा भी पति नहीं मैं भी मेरा मुंडा गरीबी बस गया है काबुल थे काम साडा ना है कार ना है मेरा मुंडा गया है कार नहीं कार बार साडे उनके पारे पे मेरा जवान मुंडा मार गया निके मशरूम उससे रह गए ना नहीं रो हमारे आवास का कम कुछ है नहीं है काम कार है नहीं एक बंदा कमाने वाला है बस और क्या कर सकते हैं. 6-year-old Vanchika has thalassemia and needs regular blood replacement. Her mother Simran is unsure whether the next treatment will come from. मेरा फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है क्योंकि ये बच्चा बीमार है ब्लड नहीं बनता थैलेसीमिया वाला है हाँ और अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कैसे हैंडल करूँगी इसको अगर अपने टाइम पे ब्लड नहीं मिलेगा कैसे हैंडल करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही इस बात को. India's Sikh community and the Afghan Sikhs now settled in Delhi are helping the rehabilitation and livelihood of the new incoming refugees. The worst has been left behind. With hope in humanity and a determination to live, Afghanistan's persecuted minority is hopeful to find a better future. In Delhi, the Afghan Sikhs and Hindus will now want to create a miniature Afghanistan where they can retain their Afghan identity and also retain their ethnic Hindu Sikh, a religious minority identity as well, leaving behind the sword of Taliban and the fear of death.
Remember, now a fresh start in India for the Afghan nationals, evacuated by India. This special report with Satya and with Jitendra Bahadur, Pooja Shali for India Today. Despite all physical disabilities and other challenges, our para-athletes decided to shine at the Tokyo Paralympics 2020. 5 gold medals, in total 19 medals, and therefore a record has been set as well. They have returned, however, with a welcome, but the fact is, what next for these para-athletes? In our special campaign, Tane Palat Do, India Today with Thumbs Up continues to bring you the honor and glory that the para-athletes have brought to India. Take a look at this special report. The champions have returned home to a tumultuous welcome. An unprecedented success at the Paralympic Games, India have made their presence count with 19 medals, including 5 gold. For every athlete, it was a battle they've been fighting for years, and in Tokyo, they flipped the script to prove all their naysayers wrong. Singraj Adana, who won 2 medals at these games in shooting, is a story of how to overcome adversities in pursuit of a dream. मैं एक किसान फैमिली से संबंध रखता हूं, तो कैश की समस्या का समाधान मेरी वाइफ ने बेखूबी मेरा साथ दिया, अपने गहने गिरवी रखे और वो पैसे से हमने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। लेकिन जैसे ही मैंने एशियन गेम में मेडल लिया, तो हरियाणा सरकार ने मुझे प्रोत्साहन जो राशि दी थी, उससे मैं अपने गहने भी छुटा पाया अपने वाइफ के, और अपने जो दिनचर्या की जरूरतें थी मेरी शूटिंग की, मैं उनको पूरी तरीका से उस पैसे का सदुपयोग कर पाया। Before Tokyo, Rio Paralympics were India's best ever games with 4 medals, but this year's success has ensured that para-athletes and para-sport in the country have overturned expectations to be now looked upon with respect. आने वाले टाइम में 80, 82, 83, 85 तक भी अगर जो भगवान ने चाहा तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि इस गैप को मैं जितना कम कर सकूं, ताकि पैरा स्पोर्ट्स में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दें कि पैरा स्पोर्ट्स के लेके लोगों का नजरिया बदल जाए कि नहीं, पैरा वाले भी बहुत ज्यादा तगड़े हो रहे हैं आजकल। With the Prime Minister himself leading the tributes, surely these performances will propel para sports in the country into a new era. More investments will come in, more efforts will be put in as para-athletes will strive for more success, just like our champions of Tokyo Paralympics. मैं जैसे मैंने बाकी सबको भी कहा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मैं अपने बेस्ट नहीं दे पाया इधर, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में जितना मेरे से बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि अभी अगर जो एबल्ड थ्रोवर्स की बात करें तो 87 मीटर पे उनका गोल्ड गया, हमारा 68, तो लगभग 18-19 मीटर का फर्क है। For many of these athletes, life had come to a standstill, but they fought their way up, and today the entire nation is saluting and celebrating their success stories. Sports Bureau, India Today.